The topic we are going to discuss about is solids, and the subtopic is properties of solids. Under the heading of properties of solids, we are going to discuss about geometrical shape, melting points, cleavage planes, anisotropy, symmetry, habit of a crystal, isomorphism, and the list continues to polymorphism, allotropy, and transition temperature. So the first property is geometrical shape. All crystalline solids have a definite distinct geometrical shape due to orderly definite arrangement of atoms, ions और molecules in 3D spaces. जो interfacial angles हैं they are always same. So यहाँ पे या तो आपके पास solids हैं वो tetrahedral होंगे, ट्राइंगुलर होंगे, कोन होंगे, क्यूब शेप होंगे, हेक्सागोनल प्रिज्म होगा, स्फीयर या सिलिंड्रिकल होंगे. इनमें से वो किसी भी शेप के हो सकते हैं बट कोई अमॉर्फस शेप नहीं हो सकती. Next are the melting points. Crystalline solids have sharp melting points and can be identified from their definite melting points. क्योंकि उनकी ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है इसलिए वो एक खास टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से वो उनका एक मार्क्ड फीचर बन जाता है, जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि yes, this is a crystalline solid. Next are the cleavage planes. Whenever the crystalline solid broke, they do so along a definite planes. These planes are called the cleavage planes. They are inclined to one another at a particular angle for a given crystalline solid. जो भी crystalline solid है, particular crystalline solid जिस shape में present है, उसके according angles पे वो cleave कर रहा होता है, वो randomly cleave नहीं करता. So the next is anisotropy, some of the crystal variation in physical properties depending upon the direction. वो properties जो direction पर depend करती हैं उन्हें हम anisotropic properties कहते हैं, and this phenomena is known as anisotropy. These are refractive index, coefficient of thermal expansion, electrical and thermal conductivity. So electrical conductivity of graphite is greater in one direction than the other. Actually ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ पैरेलल टू द लेयर्स मोबाइल होते हैं, परपेंडिकुलर टू द लेयर्स मोबाइल नहीं है, जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो पैरेलल टू द लेयर्स is much more effective than perpendicular to the layers. So ग्रेफाइट का आप जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो यू कैन इजीली सी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ पैरेलल टू द लेयर्स मोबाइल हैं, ना कि परपेंडिकुलर टू द लेयर्स. इसीलिए जब वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वो सिर्फ पैरेलल टू द लेयर्स कंडक्ट कर सकते हैं. Next is symmetry, the repetition of faces, angles or edges when a crystal is rotated by 360 degrees along its axis is called symmetry. Symmetry can be of center of symmetry, plane of symmetry, axis of symmetry. Let's discuss a question. The overall structure of diamond looks like face-centered cubic, tetragonal, square planar, or hexagonal. And the structure of diamond is face-centered cubic. So this was all about the properties. I hope you have understood it well, and thank you so much.